Good morning, students. In this lecture, we discuss correct, incorrect value of mean and standard deviation. In certain cases, mean and standard deviation are calculated by using one or two incorrect values of the variable, just as we can correct an incorrect mean. Similarly, there is a procedure of correcting an incorrect standard deviation. The various steps in the calculation of standard deviations are as follow. First step किया, find out incorrect sum of the square value of the variable, that is पहले ਅਸੀਂ summation x square ਨੂੰ find out करेंगे incorrect summation x square ਨੂੰ. This is to be found by using the formula standard deviation is equal to under root summation x square over n minus mean square. इससे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਮੀਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ. ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੋਰੈਕਟ summation x square is equal to n standard deviation square plus mean square. इस तो से की फाइंड आउट करेंगे summation x square incorrect. Second, find correct summation x square. To do so, we subtract the square of the incorrect item from incorrect summation x square and add the square of correct item to incorrect summation x square. Thus, correct summation x square is equal to incorrect summation x square minus incorrect value plus क्या आ गया, correct value just here. Last step is apply the following formula. Correct standard deviation is equal to under root correct summation x square over n minus correct mean the whole square. First example, when one value is wrongly taken, so example given, for a group of 100 observations, the mean and standard deviation were found to be 60 and 5 respectively. Mean 60 and the standard deviation is 5. Later on, it was discovered that a correct item 50 was wrongly copied as 30. Find correct mean and स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मीनस कि जी करैक्ट वैल्यू 50 सी उसनों रोंगली 30 यूज़ कर लिया गया है मीन फाइंड आउट करने के लिए. गिवन वैल्यू कि हम देखो ये एन गिवन है साढ़े को ऑब्जरवेशन दैट इज़ 100 मीन 60 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन साढ़े को कितनी है 5. नाउ कैलकुलेशन ऑफ करैक्ट मीन, पहले असी करैक्ट मीन ਨੂੰ फाइंड आउट करांगे. मीन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ मीन इज इक्वल टू ਸਮੇਸ਼ਨ x ਓਵਰ n. x ਦੀ मीन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ, दैट इज 60 ਸਮੇਸ਼ਨ x ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ इज 100.
So 100 multiply 60. So summation x is equal to 6000. That means incorrect. Summation x is equal to 6000. So correct summation x is equal to incorrect summation x minus correct item plus correct item minus incorrect item. Incorrect summation x के ਅਸੀਂ find out ਕੀਤਾ 6000 plus correct item ਕਿਹੜੀ ਹੈ that is 50 wrongly taken हुई सी 30 minus करेंगे 30 is equal to 6020. that means correct summation x is 6020. ਹੁਣ correct mean क्या आएगा hence correct mean is equal to summation x over n. summation x की वैल्यू साढ़े कोल है 6020 n is 100 is equal to 60.20. that means correct mean की वैल्यू है साढ़े कोल 60.20. now next we calculate correct standard deviation. इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे पहले समेशन एक्स स्क्वायर ਨੂੰ फाइंड आउट करेंगे इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन द होल स्क्वायर. now putting the values we get standard deviation the value see 5. समेशन एक्स क्या सानू नहीं पता है एन इज़ 100 माइनस मीन की वैल्यू सी इनकरैक्ट वाली फिल करेंगे थे पहला दैट इज़ 60 का स्क्वायर रूट. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे एक ही बन गया 5 का स्क्वायर 25 एरा स्क्वायर कितना अंडर रूट कैंसिल हो गया समेशन एक्स स्क्वायर 100 माइनस इसका स्क्वायर कितना 3600. ये वैल्यूज़ नू इस साइड लैके एक बन गया 25 प्लस 3600 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर 100. so therefore incorrect summation x square is equal to ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾके 125 plus 3600 is equal to 362500. so now correct summation x square is equal to incorrect summation x square plus correct item the square plus minus incorrect item the square. इनकोरैक्ट समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू सी फाइंड आउट की दैट इज़ 362500 प्लस कोरैक्ट आइटम साढ़े को गिवन है 50 उसका की करांगे सी स्क्वायर इनकोरैक्ट आइटम सी 30 द स्क्वायर इज इक्वल टू 362500 प्लस 2500 माइनस 900. so therefore correct summation x square is equal to 364100.
So correct standard deviation is equal to under root summation x square over n minus mean the whole square। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਸ਼ਨ x ਸਕਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 364100 n ਇਜ਼ 100 ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 60.20 ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3641.00 minus 3624.02 is equal to 16.96 इस अंडर रूट ਨੂੰ सॉल्व किया वैल्यू हैगी 4.12 so therefore correct mean is equal to 60.20 and correct standard deviation is equal to 4.12। इस numerical ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ wrongly taken ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ incorrect ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ numerical ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 values are wrongly taken ਜਿਹੜੀਆਂ 2 values wrong ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ correct 2 items ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਸਾ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। 2 correct values ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ।